हाय एवरीवन, दिस साइड सोनिया हियर और आज हम करने वाले हैं रिवर्स डिकोपाज विद डिकोपाज पेपर, स्टेंसिल, ट्रांसफर शीट एंड चॉक पेंट्स और भी बहुत कुछ है. नाउ हियर फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू द फसी कटिंग वर्क. सो जो पेपर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दैट्स अ डिकोपाज पेपर एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दिस एज अ रिवर्स डिकोपाज पेपर टेक्निक. एंड येस, यू नीड टू फसी कट दिस. अगर आप कोई और पेपर यूज़ कर रहे हैं या नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, यू कैन डू द फसी कटिंग वर्क और यू कैन इवन यूज़ योर ब्रश वाटर टेक्निक. Just in case if you don't know what is brush water technique, check out our YouTube channel and you can see tons of tips and tricks on brush water technique. And yes, here I'm doing my quick fussy cutting work. Whatever the supplies I'm using is available on our website at growingcraft.com. You guys can check that. And yes, ये बहुत super easy technique है. Just do your fussy cutting work and then you can stick it on your glass plates. Now, talking about the reverse decoupage, I have already done tons of them on various surfaces, but this is all about the glass plate. So here is my glass plate and I'm going to use my cutout. So first I'm using my decoupage adhesive. I'm using Mod Podge. You can use any of your adhesives, specifically the decoupage ones. बाद में मत बोलना सोनिया आपने बताया नहीं. I'm telling you guys, please use your decoupage supplies only. आप कोई और supplies use करेंगे, it is not going to work out properly. अब यहाँ पे एडिसिव लगाने के बाद आई एम मेकिंग श्योर दैट आई प्रेस दिस रियली वेल. आप इसके लिए अपना बोन फोल्डर यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ ओल्ड क्रेडिट कार्ड और एनीथिंग. स्टिक हो जाने के बाद अब हम यूज़ करेंगे हमारा स्टेंसिल्स. Just in case if you guys don't know, we have huge collection of stencils on our website. Now, as it's a reverse decoupage, I am going to do my stencil work from the back side. So reverse decoupage technique is all about you do it from the back side of the surface and then you seal it up, and from the front you can literally use that plate for anything and everything. अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्राउन शेड चॉक पेंट का. लेटर ऑन आई रियलाइज दैट मे बी आई शुड हैव गॉन फॉर अ लिटिल लाइटर शेड, बट देन या दिस ऑल्सो लुक रियली गुड विद द फेस्टिव सीजन like season theme of Indian. So I really liked it, but you guys can choose the color designs options accordingly. Now on the above you can see on my YouTube channel that I have even done the reverse decoupage on a cup. So those tutorials are there on my YouTube channel. Do check out. Like if you have any of the old glass cups or anything, you can definitely do decoupage art on that. Drying out my stencil work, and now it's time for second layer of my stencil work. Second layer के लिए of course I am using another shade. Please do use your stencil brushes. It really helps in giving a neat and clean work. आप अगर पिक्चर्स देखेंगे ना एंड में, यू विल सी दैट प्लेट्स की each dot is visible. That's how your artwork should be. अगर आप stencil use कर रहे हो, the design should be very very clear. So you have to make sure that you use your supplies wisely. Use a good quality supplies. They are going to last. सो स्पंज रबर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रिफर यूजिंग माई stencil ब्रश फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निक बिकॉज इट रियली हेल्प्स. एंड आपकी जितनी भी लाइन्स ग्रिड्स जितने भी होते हैं ना, दे लुक वेरी वेरी क्लियर. सो अब मैंने प्लेट पे अपने अराउंड द लाइक एजेस मैंने बॉर्डर बना दिया एंड इट लुक्स अमेजिंगली ब्यूटिफुल. Again, I need to dry it up before moving on to the next step. So heat gun is very very important, guys. You can check out our website for that. Now moving forward, I just thought of adding some elements. So here I'm doing my fussy cut again. I'm using my transfer sheet. Ideally, like I said, अगर मैंने brown color, dark brown color नहीं लिया होता, कुछ lighter shade लिया होता तो ये flowers और अच्छे से दिखते. But don't worry, हम try करेंगे, practice करेंगे, then only we are going to create something beautiful. सो फसी कट करने के बाद आई एम स्टिकिंग इट ऑन माई मोटिव. द सेंटर मोटिव जो है उस पर मैं इसको स्टिक कर रही हूँ. एंड आई एम जस्ट यूजिंग 2 flowers. दैट्स इट. इफ यू वांट यू कैन यूज मोर flowers. You can do your stamping. You can use like literally do your decoupage paper layering and done. So transfer sheet को लगाने के बाद you need to apply some water. तो मैं थोड़ा सा plain water लेके ब्रश से अपने ट्रांसफर शीट्स को वेट कर रही हूँ. एंड वंस जस्ट गेट्स वेट रियली वेल, आई एम गोइंग टू जस्ट पिल इट ऑफ. सो ट्रांसफर शीट्स आर वन ऑफ द most easiest thing what you can do. If you are a beginner, try out the transfer sheets. If you want to try a little more variant in your decoupage art, try your transfer sheets with your decoupage paper, decoupage napkin. The options are literally unlimited. आप अलग अलग थीम्स को कंबाइन कर सकते हैं एंड दे आर सुपर ईजी. लाइक यू कैन हियर इन द वीडियो यू कैन सी लाइक हाउ क्विकली आई कुड जस्ट पिल इट ऑफ एंड आई कैन सी माई ब्यूटिफुल ट्रांसफर शीट. ऑल्दो लाइक आई सेड, मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा कलर का ब्लेंडर कर दिया है.
like I liked it, but I could have used a lighter shade. तो मेरा I think transfer sheet और थोड़ा अच्छा prominently दिख जाता. But otherwise I'm really happy with this color combination. So transfer sheet peel off करने के बाद में अब हम इसको cover करेंगे हमारे chalk paint से. Now there are two ways. Either you just apply the white color gesso and your base is done. Here I wanted to play around with the color. So here right now what I'm doing is I'm using my chalk paint and I'm just dabbing one thin coat of chalk paint. Now if you check out my YouTube channel, you will see reverse decoupage में बहुत सारे variations होते हैं. Like on the screen you will see a small clip right now. So this is of another decoupage plate, reverse decoupage plate what I have done with the napkin. So do check out these tutorials on my YouTube channel and I'm sure you guys are going to enjoy this. Now coming back to this one, here I'm using my orange color chalk paint and I'm just giving one coat of chalk paint here. And as it's a very thin coat of chalk paint, I can either go for the orange color for more darker look, but mera shade already brown thoda dark tha, so I thought of giving it a white coat of gesso. Gesso is very important. Do not use your acrylic paints. They are not going to stay for a longer time. And of course, हर एक layer के बाद आपको dry करना ज़रूरी है. Now you will see in this video में मैंने like video बहुत छोटा है, but I have used my heat gun a lot. Why? Because it saves a lot of time. So do try out the heat gun. It will really save your time. And yes, coming back to this tutorial now, you can see my edges are looking so beautiful, so amazing. To be very honest, this project has turned out really beautiful. Like this is just perfect for my Indian decor, and I really loved it. And this can be used for like serving snacks. This can be used for wall decoration, so you can just play around with the supplies. Now here I'm using my gesso to cover it up, and later on you need to seal it up with a varnish. Of course 2 coats of varnish is like really compulsory, but before that you need to make sure that you dry up everything really well. So yeah, with this our basic reverse decoupage artwork is done. Check out more tutorials on our YouTube channel and Facebook page too, and yes, do check out our website growingcraft.com and see how beautiful my plate looks like. This is looking amazing, and thank you so much for watching guys. Take care and bye bye.